में लगे हुए 8 थ्रॉटलेबल इंजन हैं जिससे उसके प्रणोद बल को कम किया जा सकेगा। ऐसे 4 इंजन 4 कॉर्नर पे लगे हुए हैं, 4 कोनों पे लगे हुए हैं और ऐसा ही एक 800 न्यूटन का इंजन जो है बीच में लगा हुआ। और बिल्कुल हम करीब इस समय विक्रम डिसेंट के स्टार्ट कर दिया गया है और रफ ब्रेकिंग जो वो है घड़ी है वो बहुत ही नज़दीक होगी। इस समय हम धीरे धीरे अब उसकी गति को कम करना शुरू करेंगे। Yes, the descent phase of operation for the Vikram lander has just been initiated with the firing of the 4 liquid engines, which I was mentioning, the 4 throttleable engines. The activity has just started, and right now we are at 35 seconds since the engines have fired. And just to give an update, the Vikram lander, when it was in an orbit of around 30 kilometers, when the descent operation started, it had a velocity of nearly 1640 meter per second. So what we are going to do through this entire phase of 15 minutes of operation when the powered descent will be done is to make this orbital velocity of the Vikram lander from 1640 meter per second to almost 0 meter per second so that the spacecraft could land on the surface of the moon. So the activity has just initiated. As you can see on your screen the view of the Mission Control Center with Chairman ISRO and Director of URSC and Dr. Suresh briefing the Honorable Prime Minister about the flight event that are going on. So the time elapsed is almost 1 minute 28 seconds. जी हाँ, धीरे धीरे गति कम होती हुई 1507 मीटर प्रति सेकंड हो चुकी है, जबकि हमने 1630 मीटर प्रति सेकंड की गति से प्रारंभ किया था और हर घड़ी की हर क्षण की जो जानकारी है वो प्रधानमंत्री को पहुंचाई जा रही है। और इस समय हम करीब 1 मिनट 52 सेकंड का समय व्यतीत कर चुके हैं और वेगमान लगातार घटता हुआ, और यही उद्देश्य भी हमारा है कि धीरे धीरे जो रफ ब्रेकिंग है उसके दौरान चारों जो इंजन हैं उन चारों 800 न्यूटन वाले इंजन जो भारत ने पहली बार विकसित किए हैं, ये पूरी जो प्रणोद प्रणाली है ये पहली बार विकसित की गई है और इस प्रणाली के चारों इंजन लगातार फायर करते हुए प्रज्वलित होते हुए और लगातार वेगमान घटता हुआ। So almost 2 minutes 20 seconds, and we expect this rough braking phase which was just initiated to last for nearly 10 minutes, during which time the velocity, the orbital velocity which the Vikram lander possessed of the order of 1640 meter per second should reach to something like 140 meter per second at the end of the rough braking phase. So basically during this phase it's a real brute force of operation where we are trying to kill the velocity which the spacecraft currently has, making it revolve around the moon with an orbital altitude of 30 by 100 kilometers. So I am seeing on my screen that the velocity from 1680 meter per second has come down to almost 1300, so nearly 350 meter per second velocity for the Vikram lander has been reduced. 3 minutes have elapsed, and maybe another next 7 minutes we should have quite a substantial reduction in the velocity to ensure that at touchdown we have almost near 0 meter per second velocity to ensure that the Vikram lander has a soft landing on the surface of the moon at the very desired landing site location. So we are right now in the rough braking phase of operation, nearing 3 minutes 39 or 40 seconds, and almost I would say 480 meter per second velocity has been reduced, which is clear indication that the entire operations during which the 4 throttleable engines are being fired has been performing absolutely nominally, and the reduction in the velocity and the down range, the range it has to, after the descent operation has started, it has to cross almost a range of 600 kilometers before it lands at a predefined destination. So I am seeing a very close match with the pre-flight and the flight prediction. The velocity of the Vikram lander has come very close to 1100 meter per second. So almost to 500 meter per second velocity reduction has happened in just 4 minutes. So another 6 minutes to go before we reach in the mission objectives of the rough braking phase. जी हाँ, करीब 6 मिनट का समय 4 मिनट का समय व्यतीत हो गया है। 6 मिनट लगभग और वेगमान कम करने के लिए लगेंगे। इस समय करीब
जो सारी गतिविधियां हैं, सारी प्रणालियां हैं, वो अभीष्ट रूप से चल रही हैं। इस अवतरण को सुरक्षित और कोमल या सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग बनाने के लिए अनेक अभिकल्पनाओं पर विस्तृत चर्चा और गहन अध्ययन के पश्चात ही विशेषज्ञों ने अनुमति प्रदान की थी। इसरो के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसरो ये पहली बार करने जा रहा है। इसके लिए प्रोपल्सन, ऑनबोर्ड कंप्यूटर, सेंसर्स, स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म, थर्मल जैसी अनेक प्रणालियों के उचित सामंजस्य से ये सब कुछ संभव हो सकेगा। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सारी गतिविधियां स्वचालित रूप से चल रही हैं। इस दौरान लैंडर में लगे अनेक संसूचक जरूरत के अनुसार आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं और ऑनबोर्ड कंप्यूटर उचित गणना के आधार पर यथोचित निर्णय लेकर लैंडर को चंद्रमा की तरफ उतरने में सहायक सिद्ध हो रहा है। करीब करीब 939 मीटर प्रति सेकंड का वेग हम प्राप्त कर चुके हैं। लगभग अगर हम बात करें तो करीब करीब 700 मीटर प्रति सेकंड का वेग हम घटा चुके हैं। इसलिए हम ये बड़े कॉन्फिडेंस से, आत्मविश्वास से कह सकते हैं कि हमारी जो ये प्रणोदक प्रणाली है, प्रोपल्सन सिस्टम है, ये बड़े ही सुचारू रूप से गतिविधियां अपना निष्पादन दे रहा है। इस समय हम करीब करीब 6 मिनट व्यतीत कर चुके हैं और आने वाले 4 और मिनट में हम लगभग जो इसका क्षैतिज मान है वो हम काफ़ी कम कर पाएंगे। करीब करीब शून्य के बराबर, लगभग 140 मीटर प्रति सेकंड रह जाएगा। So almost 6 minutes have elapsed since we started the power descent